हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी इंग्लिश के सिलेबस से लिए गए एंड क्वेश्चंस आर फ्रॉम द यूनिट लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर वर्ड्सवर्थ एडवोकेट्स फॉर इन पोइट्री अकॉर्डिंग टू द प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स। अगले कुछ क्वेश्चन जो प्रीफेस टू लिरिकल बलाड जो वर्ड्सवर्थ का वर्क एक्चुअल में एक एड ऑन था उस पे जो इनका प्राइमरी 1798 में आया था प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स। ठीक है, उसके बारे में लिरिकल बलाड जो आया था उसके बाद जो 1800 में पब्लिश हुआ था, फिर 1802 में उसको एक्सपेंड किया गया था। ग्रैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऑर्डिनरी लाइफ एंड कॉमन पीपल, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, साइंटिफिक डिस्कवरी। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। प्राइमरी सब्जेक्ट ये था कि ऑर्डिनरी लाइफ और कॉमन पीपल के बारे में बात की थी, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री के बारे में बात की थी। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर पोइट्री? कॉम्प्लेक्स, एलिवेटेड, एवरीडे, सिंपल लैंग्वेज, rhythmic, formal language, ancient, classical. So Wordsworth was very clear that language of poetry should be language of layman. So ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, फॉर्मलिज्म देखते हैं, रशियन फॉर्मलिज्म देखते हैं, वहाँ देखते हैं और ज़्यादातर लिटरेचर में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड लिटरेचर शुड बी टफ। इवन टुडे पीपल बिलीव दैट इफ समबडी इज राइटिंग इन सिंपल लैंग्वेज तो उसको अच्छा राइटर कंसीडर नहीं करते हैं। देर आर लॉट ऑफ सच पीपल, बट ऑन द contrary there are people who believe in that concept of Wordsworth that language of novel poetry and all other genres should be simple. Okay, तो ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है। दोनों तरफ लोग सपोर्टिव होते हैं बट वी हैव टू रिमेम्बर बोथ। ओके, वर्ड्सवर्थ मानता था कि जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है वो एवरीडे जो यूज करते हैं हम लैंग्वेज उसकी जैसी होनी चाहिए ताकि उसको सब लोग समझ सकें, सिंपल होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट इन पोइट्री? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शंस आर, लेट मी गिव few seconds. Imagery and description, expression of feeling, rhythmic patterns, complex symbolism. expression of feeling, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ड्सवर्थ बिलीव करता है कि एक्शन और प्लॉट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है कि हम उसको कैसे फील एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब पोइट्री? तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। बाकी ऑप्शन भी पढ़े देता हूँ। एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लॉजिक एंड रीजन, एज ए मॉरल आर्ट requiring precise structure, as a narrative of epic events. So as it is very popular, as you know that it is very very popular uh, definition of poetry, the spontaneous overflow of powerful feelings. So option B is the correct answer. Next question, what does Wordsworth mean by इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी? ये जो पोइट्री की डेफिनेशन दी है उसी का पार्ट है, तो उसका क्या मतलब बनता है इस वाली लाइन का? इमोशंस दैट अराइज फ्रॉम क्वाइट कंटेम्पलेशन, ए पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड बिफोर राइटिंग, इमोशन दैट कम्स फ्रॉम इंटेंस एक्शन, रिकॉलिंग पास्ट इवेंट्स while in tranquil state of mind. So option D is the correct answer here. Again, very important question. Next, what year was the preface to Lyrical Ballads greatly expanded? 1802. Again, saying expanded, not published. 1798 में फर्स्ट वर्जन आया था लिरिकल बलाड्स का, 1800 में प्रीफेस ऐड किया गया था, फिर इसको एक्सपेंड किया गया था 1802। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है इसको एक्सपेंड कब किया गया था ग्रेट वे में, तो 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज कॉलरिज डिफाइन द प्राइमरी इमेजिनेशन? अब कॉलरिज के की वर्क है बायोग्राफी लिटरेरिया, वहां से कुछ क्वेश्चन है। तो प्राइमरी इमेजिनेशन को कॉलेज कैसे डिफाइन करते हैं? एज ए मोड ऑफ मेमोरी, एज द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स अकिन टू डिवाइन क्रिएशन, एज ए कंसियस प्रोसेस ऑफ थॉट, एज द एबिलिटी टू रिकॉल पास्ट इवेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज द क्रिएटिव पावर ऑफ यूनिवर्स, प्राइमरी इमेजिनेशन को बोलते हैं एज द क्रिएटिव पावर ऑफ यूनिवर्स अकिन टू डिवाइन क्रिएशन।
प्राइमरी सेकेंडरी जो इमेजिनेशन की बात की गई, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन एंड फैंसी, चैप्टर 13, 14 एंड 18, ये तीनों चैप्टर पार्ट हैं यूपीएचएससी इंग्लिश का। सो ये 13 में बात की गई है ना इमेजिनेशन और फैंसी। व्हाट डिस्टिंग्विशेस द सेकेंडरी इमेजिनेशन फ्रॉम प्राइमरी इमेजिनेशन? Secondary imagination is more powerful and uncontrollable. Secondary imagination is coexistent with the conscious will and is limited in its creative power. Secondary imagination can create without limitation. There is no distinction between primary and secondary. So option B is the correct answer. Secondary imagination is coexistent with the conscious will and it is limited in its creative power. So option B is the correct answer. Next question देख लेते हैं. According to Coleridge, how does the secondary imagination operate? Secondary imagination कैसे operate करती है? It creates new forms from nothing. It works in divine, unrestrained way, like the primary imagination. It struggles to idealize and unify, but is restricted and unable to fully recreate primary act of creation. It is not involved in any creative process. So option C is the correct answer. You may pause the video, you may think these lines, you may understand these line by pausing the video. Next question देखते हैं. What does Coleridge mean by fancy? Fancy का क्या मतलब है? A form of the secondary imagination, a repository of human desires and creative thoughts, a mode of memory freed from time and space, influenced by the will and choice. And option D, divine force that creates perfect form. So option C is the correct answer. A mode of memory freed from time and space, influenced by the will and choice. So option C is the correct answer. Next question. Uh, how does fancy differ from imagination according to Coleridge? Imagination से कैसे अलग है? Fancy. Fancy is a creative faculty like the imagination. Fancy is higher mode of perception associated with the divine. Fancy operates with fixed, ready-made materials and is not a creative force. Fancy has no connection to memory or the will. So option C is the correct answer. Next question देखते हैं. I believe you are enjoying the question. These are tough questions, tricky questions, but such questions are asked. Very basic or surfacial questions might not be asked in exam, but these kind of tricky and tough question can be asked. How does Coleridge view fancy in relation to the secondary imagination? Fancy is more advanced form of imagination. Fancy is lesser faculty that deals with pre-existing material rather than creating new forms. Fancy is highest form of creative power. No, fancy is the same as the second. No, so option B is the correct answer. Next question देखते हैं. Again, requesting you to don't go to the numbers. ये numbers आपको थोड़ा सा irregular मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ number systematic नहीं है. So you may ignore them. Before discussing next question, I would like to share one information, one news, that if any of your friends, colleagues or students is preparing for UP, TGT, PGT English exam, so you can share this book to that one. यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी, ये बुक आपको काफ़ी सस्ते में अभी मिल रही है, ऑफर चल रहा है तो काफ़ी सस्ते में मिल रही है. आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कीजिए. और इस बुक की थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं. इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस कवर्ड है और हर चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं और उसके बाद लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है. तो ओवरऑल मिला के इसमें लगभग 1500 एमसीक्यूज से ज़्यादा हैं और जो सिलेबस है वो भी डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में है. सिलेबस भी दिया गया है पूरा, ग्रामर भी है, जो लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर जो राइटर्स हैं यूपी में टीजीटी पीजीटी वो हैं, उसके अलावा जो जीआईसी में कवर किए जाते हैं वो भी हैं और इसके अलावा जो अमेरिकन या ब्रिटिश राइटर हैं वो सब हैं. ग्रामर, फिगर ऑफ स्पीच या फिर एंटोनियम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं. तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. और आई विल रिक्वेस्ट यू टू सजेस्ट दिस बुक टू योर स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम.
Okay, now let's talk about our next question. According to the text, what are the two cardinal points of poetry? Options and the use of rhyme and rhythm, exciting sympathy thought through the truth of nature, and giving novelty through imagination, creating a clear plot and a strong character, a balance of action and emotion. So option B यहाँ correct answer हो जाएगा. Exciting is sympathy through truth of nature and giving novelty through imagination. Next question देखते हैं. How does imagination help in viewing nature according to the text? Again, we are talking about the same बायोग्राफी लिटरेरिया. ठीक है. एसटी कॉलरिज 14th चैप्टर से शायद एक क्वेश्चन है, तो यू कैन रिमेंबर देम. It distorts nature into something unrecognizable. It allows us to see ordinary things in new ways. It ignores nature entirely and creates a new world. It limits how we perceive the natural world. So option B यहाँ correct हो जाएगा. It allows us to see ordinary things in new ways. Next question. How is the poet described in the ideal sense? As someone who simply describes nature as it is, as someone who brings the whole soul into activity and harmonizes emotions with reason, as someone who follows strict rules and convention of poetry, as someone who focuses solely on technical mastery. So option B is the correct answer. As someone who brings the whole soul into the activity and harmonizes emotions with reason. काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमेजिनेशन इन पोइट्री अकॉर्डिंग टू कॉलरिज? Function of imagination in poetry. It is merely a tool for creating vivid imagery. It blends and reconciles opposite qualities, revealing a deeper truth. It is only concerned with creating original plots and characters. It serves no purpose beyond aesthetic beauty. So option B is the correct answer. It blends and reconciles opposite qualities, revealing a deeper truth. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the poem referenced by Coleridge, how is the poetic imagination compared to the soul? Both transform physical reality into something divine. The soul is described as passive observer of the material world. Soul only deals with sensory experiences without transforming them. The soul is described as completely separate from the imagination. So option A correct है. Both transform physical reality into something divine. Option A is the correct answer here. Very tricky and tough question. You may remember this. Next question. What does Coleridge mean by the truth of nature in relation to poetry? Again, tough question. Poetry should depict nature exactly as it is. Poetry should ignore nature and focus on fantasy. Poetry should reflect on idealized and transformed version of nature. Poetry should focus on the chaos of natural world. So option C is the correct answer. Poetry should reflect an idealized or transformed version of nature. जब कॉलेज बोलता है ट्रूथ ऑफ नेचर तो उसका मतलब ये बोलना चाहता है. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म सेंसरी प्लेजर्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? Options are: it makes them more tangible and real, it changes them into more abstract intellectual pleasures, it intensifies their physical qualities, it ignores them entirely. So option B is the correct answer. It changes them into more abstract intellectual pleasures. So this is again a collection of 20-25 questions from the UPHSC English syllabus from unit 5 that relates to theory and criticism. सो कैसी लगे आपको कमेंट जरूर कीजिए. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है. और अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दीजिए. और अगर आप या आपका कोई स्टूडेंट वो बुक खरीदना चाहता है यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो अभी काफ़ी सस्ती है, ऑफर चल रहा है. यू कैन शेयर दिस टू योर स्टूडेंट्स. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. थैंक यू.